Now we'll try to hold on. मैंने जैसा अभी अभी बताया है कि किसी भी एक इंडक्टर कॉइल के लिए या किसी भी एक सोलेनॉइड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एक फिक्स और एक कांस्टेंट वैल्यू है एंड इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। अब हम इसी समय वह कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। यहां कोई इंडक्टर कॉइल है, द लेंथ ऑफ इंडक्टर कॉइल इज एल। इस इंडक्टर कॉइल की लेंथ एल है। द रेडियस ऑफ इंडक्टर कॉइल इज आर। If it's a long solenoid, if it's a long solenoid, सबसे पहले लॉन्ग सोलेनॉइड की कंडीशन क्या है? इट्स लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5 टाइम्स इट्स रेडियस। इट्स लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 5 टाइम्स इट्स रेडियस and magnetic field within the solenoid is mu naught Ni. It's nearly constant within the solenoid. सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नियरली कांस्टेंट है। इस जगह पर R इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, L is length of solenoid, N is number of turns per unit length, capital N is number of turns and it's equal to small n into L. Capital N is number of turns, small n into L. And I is current in the solenoid. Current in solenoid or inductor. This B is, we always know that B is d phi by dA or d phi is B dot dA. Phi is integral of d phi or integral of B dot dA or phi is equal to B into A. We used to say this is flux linked with each turn of solenoid. This is flux linked with each turn of
सोलेनॉइड। इतना फ्लक्स एक एक सोलेनॉइड की टर्न के साथ में लिंक्ड है। द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड, एक एक टर्न के साथ में हम कहते हैं यह फ्लक्स इस तरह से पास हो रहा है और एक एक टर्न से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में n टर्न्स है, सोलेनॉइड में n टर्न्स है, तो टोटल n टर्न्स के साथ में जो फ्लक्स लिंक्ड है टोटल फ्लक्स linked with n turns of solenoid, इसे हम phi dash कह देते हैं, n into flux linked with each turn, n into b into a. So this total flux linked is, n की जगह पर मैं लिख देता हूं NL, b की जगह पर मैं लिख देता हूं म्यू नॉट NI, और a की जगह पर एरिया ऑफ सोलेनॉइड की जगह पर मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स phi is mu naught pi r square L into n square into I. Induced EMF डिटरमाइन करने के लिए माइनस डी फाई बाई डी टी। इस सोलेनॉइड में जब फ्लक्स लिंक्ड चेंज होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी। म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, इस डी फाई बाई डी टी को कर रहा हूं मैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ म्यू नॉट बाई आर स्क्वायर एल इंटू एन स्क्वायर इंटू आई। हम कहते हैं म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, पाई आर स्क्वायर एल एन स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एल इंटू एन स्क्वायर इंटू डी आई बाय डी टी। Compare this expression with already derived expression, that is EMF is equal to minus L di by dt। यह EMF और यह EMF दिया di by dt, दिया di by dt। L के लिए एक्सप्रेशन हमें साफ साफ दिखने लगा है, and that expression of L is कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एक्सप्रेशन, इट्स म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर एल इंटू एन स्क्वायर। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर एनी इंडक्टर कॉइल। किसी भी इंडक्टर कॉइल के लिए
यह कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा म्यू नॉट इट्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम pi r square is the cross section area of the solenoid coil, L is the length of solenoid coil, pi r square L is volume of solenoid coil. इस solenoid coil के अंदर क्या वॉल्यूम है and n square is number of turns per unit length. It totally depends on this geometrical factors. इस तरह के geometrical factors पर coefficient of inductance of solenoid coil depend करेगा. And this is a generalized expression for induced EMF in any solenoid.